Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force in Machines. Today I am going to deliver its second lecture, which is about simple machines. We are going to discuss inclined plane today. So my dear students, let's get started with the recap of the previous lesson. So listen to the question. What are the tools? Any object that makes our work easier is known as a tool. So my dear students, now is the time for an activity. Here you can see a slide. इसको आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप इसके ऊपर से नीचे आराम से आ जाते हैं. You climb up the stairs and then you slide down. क्या आपको पता है कि इसको साइंटिफिक नेम इसका क्या है? This is an inclined plane, क्योंकि ये incline हुआ है towards a support. ये एक support है और ये एक प्लेन चीज है जो कि इसके ऊपर इंक्लाइन हुई है. तो कोई भी ऐसी चीज जो इस फॉर्म में होती है, मुख्तलिफ रैम्प्स होती हैं, उनको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. और ये एक सिंपल मशीन है. किस तरीके से सिंपल मशीन है, इसको आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है. सो डू यू लाइक स्लाइड? ऑफ कोर्स ऑल द किड्स लाइक इट. डू यू नो व्हाट इट इज? तो मैंने आपको बताया कि साइंटिफिकली हम इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं. इंक्लाइंड प्लेन को किस तरीके से, ये तो आप खेल में इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन ये एक मशीन है और इसका बहुत यूजफुल है. ये डेली बेसिस पे ये हर जगह इस्तेमाल होती है. किस तरीके से इस्तेमाल होती है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल मशीन्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस इंक्लाइंड प्लेन्स टुडे. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्री रीडिंग. व्हाट आर सिंपल मशीन्स? सिंपल मशीन कोई ऐसी चीज होती है जो कि बिल्कुल सिंपली जो है आप उसको यूज कर सकते हैं. विदाउट एफर्ट जो है ये इस्तेमाल होती है. किसी प्रॉपर मशीनरी के बगैर आप इसको यूज कर सकते हैं. फॉर रीडिंग, क्विकली ओपन पेज नंबर 152 in your GK3 book. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Simple machine. A machine is anything that can change the direction, amount of force. Sometimes tools are called machines. It is because such tools can change the direction or reduce the amount of force applied. As a result, our work becomes easy. In other words, simple machines are tools or group of tools. There are basic simple machines we use in many forms. So my dear students, बाज़ दफा simple machine को, इससे एक tool को simple machine भी कहा जाता है या machine कहा जाता है. वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो force की direction को change कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग द फोर्स डाउनवर्ड, तो हो सकता है कि वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करके कोई काम अपवर्ड जो है वो हो जाए. वो किस तरीके से होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे. और इससे जो है हमारा वर्क बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. जो आउटकम होता है इसका, उससे हमारा काम आसान हो जाता है. तो टूल कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारा काम आसान करती है, और वो मशीन तब बन जाती है जब वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है. So my dear students, today we are going to discuss about a simple machine which is inclined plane. An inclined plane is a flat surface that is higher on one end. It is also known as a ramp. It makes the movement of the things easier. It helps us in lifting heavy load with less effort. So my dear students, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक प्लांक है, फ्लैट सरफेस है, जिसको इंक्लाइन किया गया है, उठाया गया है एक तरफ से. और इसकी वजह से आपका काम किस तरह आसान हो गया कि इंस्टेड के आप वजन को खुद उठाकर ऊपर रखें, आप इसको ड्रैग करके इस प्लेन के ऊपर से जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इससे आपका काम जो है और एफर्ट जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होगी. इसी तरह ये जो स्लाइड है ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल होती है. इसके अलावा इंक्लाइन प्लेन आप तमाम बच्चों के घर में होंगी. आपके गैराज में या घर के बाहर जो है एक रैंप बनी हुई होती है जिसके ऊपर से मोटर बाइक, गाड़ी या साइकिल को आप इजीली ऊपर नीचे जो है वो ला सकते हैं. So now is the time for evaluation. What is a machine? A machine is a tool which changes the direction of the force. And what is the difference between a tool and a machine? A tool is an object which makes our work easier, और machine जो है वो force की direction को change कर देता है. Name some simple machines. Inclined plane, lever, pulley. What is an inclined plane? It is a flat surface which is inclined from one end. What is inclined plane? What is the use of inclined plane? So inclined plane is used to lift heavy load from one level to another. So now is the time for practice, for which you need to download the worksheet from the description box below and you can complete it. And the homework is question number 2, section E, given on page number 161.
And the wrap up of the lesson is simple machine makes our work easier by reducing and changing the direction of the force. An inclined plane, lever, pulley, wheel, and axle, wedge, and screw are some basic simple machines. So my dear students, I hope now you know the how inclined plane is used and what is inclined plane. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.